Viewers, exactly 1 month ago in Karauli, we witnessed communal clashes. And once again, viewers, we are witnessing them in the same state of Rajasthan, this time in Jodhpur. Now, viewers, you're watching the explosive exclusive with me, Rahul Shivshankar, where we give you news, investigative news that no other channel provides you. Viewers, let me take you now through what we know, through videos that we've accessed after our ground team hit the spots that were singed by yet another round of communal rioting. Exactly 1 month ago in Karauli, we saw a Hindu New Year procession being attacked, rioters ruling the roost. On the streets, stones, swords, sticks, brandished. Remember, to this date, the main accused in that case, a man called Matloob, is still free, allegedly due to state patronage. And now, viewers, when you look at your screens, you see visuals that put the Gehlot government, the Congress government in the state of Rajasthan, in the dock over what again appears to be another instance of inaction, another instance of being paralyzed. What are the compulsions? We are now going to perhaps unravel them. Viewers, Times Now has been incessantly reporting from the ground, speaking to all stakeholders, trying to string together the truth for you, the facts for you. Before we move on, let's show you the latest video accessed by Times Now and take a look, a close look, at the timestamp on the top right-hand side of the video. It is 11:36 a.m. Why is that important? Because it shows that even 12 hours after the first round of violence in Jalori Gate in Jodhpur, there were armed men roaming the streets almost with impunity, no police in sight, attacking people almost out of free will, attacking people almost because they knew they will get away. What you see in these visuals is just a sample of the horror that was witnessed by the hapless people of Jodhpur over the last 15 to 20 hours, viewers. That's the truth. That's the truth. And let me first describe to you what is happening in these pictures. You're seeing men running through the streets, brandishing swords, chasing others. Naked swords are out on display. All of this, viewers, at a time when Jodhpur ostensibly is under curfew. How is this happening? How could this be happening? And what are the people going through who are witness to this violence? What are they feeling? Well, we spoke to the locals, viewers. We talked to them. Here are more instances. What more can be said? How is it that last night you have a situation, a dangerous one, and the police, according to the administration, swings in, cracks down, imposes curfew, and then within 12 hours of that, or maybe a little more, you have these scenes playing out again. Where did the administration go? Or did they think printing out a notification of a curfew and putting it out there in the public domain is good enough? Viewers, listen to what the people are still fearing, what they're going through right now. Listen to them.
कितनी संख्या में लोग थे? उस पार्टी कितनी संख्या में थे? 200 लोग थे। यहाँ पे 50 आए थे, वहाँ पे उस तरफ 200 थे। पूरा कवर कर लिया। तो आप घर में उस समय मौजूद थी? हाँ, घर में मौजूद थे। हम बिल्कुल सेफ नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। और इतने उनके पास तलवारें सब थी। भैया को मारा, ये भैया खड़े हैं, इनके ऊपर लाठियां जलाई भैया के ऊपर। भैया ने लड़की को बचाने की कोशिश की, इन्होंने लड़की को भी पीट डाला। बहुत वायलेंस मचा रखा है। हम यहीं खड़े थे, ये पीछे से आए थे सारे के सारे दंगाई। इनके हाथ में लठ, कुछ पत्थर, किसी के हाथ में तलवारें, और वहाँ से आए थे और यहाँ इन्होंने तोड़ भांग स्टार्ट कर दी थी, यानी सारी जगह। इस दुकान पे बच्ची और उनके पिताजी थे, तो मैं वहाँ से सामने से आया जब ये इनको मार रहे थे, इनके ऊपर हमला कर रहे, बच्चे पर हमला करने वाले ही थे। तब मैंने वहाँ बीच में आके उसको पहले यहाँ से लेके इस घर में डाला, फिर उन्होंने मेरे पीठ पे और कंधे पे चोट दी थी। हम लोग तो अंदर थे, चाय पी रहे थे ब्रेकफास्ट वाली, और उतने में एकदम से शोर आया। बोले शोर काहे का है, बाहर जाके देखते हैं। देखा जितने तो धमाधम आवाजें आ रही थी। छोटे बच्चे और ज्यादा बड़े लोग नहीं थे, बच्चे टाइप ही थे सब, 20 साल से 15 से 20 के। गाड़ी पे एक मारी, वो तुमको दिखाई नहीं दी, आवाज जरूर आई थी मेरी गाड़ी पे, इनकी बाइक पे। तो हमने आके देखा कि और जोर से मारी, ये चिल्लाए जोर से, क्या हो रहा है ये। जितने में ये इधर इलेक्ट्रिक की दुकान है हमारे, इस पे मारी उन्होंने। तो मैंने कहा ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो तुम लोग, क्या बात है। आगे निकल के इनकी गाड़ी पे मारा, उनकी गाड़ी पे मारा। क्या कितने बजे के आसपास का ये इंसिडेंट है? 11 बजे के बीच में हुई थी। तोड़ फोड़, लकड़ियां, तलवारें सब थी उनके पास, और पत्थर आए घर पे भी, और एक बच्ची थी, बचा बच मारने लग गए उसको भी। वो लोग कितने लोग थे? करीब 200 लोग थे। 200 की संख्या में लोग थे। 200 की संख्या। कोई संभालने से नहीं संभल रहे थे वो लोग, किसी के से इधर उधर सब तोड़ा फोड़ा करने लग गए वो लोग, बहुत ज्यादा। ये किधर बच्चा है, हम तो खुद ऐसे ही रह गए देशक में कि ये क्या हो रहा है, बच्ची को भी मार देंगे, ऐसे हो रहे थे। एक चीज बताओ, 15 से 20 साल के बच्चे इतना उदंगड़ कर सकते हैं क्या? और नमाज पढ़ के आते वक्त वो क्यों आए? उनके हाथ में सामान कहाँ से आए? नमाज पढ़ने गए थे, सुबह गए। हम लोग यहीं रहते हैं 60 साल से, कभी एक दूसरे से हमने झगड़ा नहीं किया। वो बच्चे कैसे आए? इस जैसे इतने बच्चे छोटे हैं, उनके पास ये सामान कहाँ से आया? किसी ने तो प्रोवाइड कराया होगा, या किसी ने तो उसको गाइड किया होगा। हमारे बच्चों को क्या लेना देना, इस बाइक से क्या दुश्मनी है? सिर्फ दहशत फैलाने के लिए। कम से कम 100-200 लोगों की संख्या थी। हाथ में क्या कुछ था? हाथ में लाठी वगैरह, हॉकी, डंडे सब थे इधर। वो जब इधर से आए थे और आते ही सब दुकानों का पर्दे फाड़ दिए, सब तोड़ फोड़ कर दिए अंदर। बच्ची पर भी अटैक कर रहे थे? अटैक कर रहे थे, वो इतनी डरी हुई थी, जोरदार हालत में बचाया है। दूध वाला ने मिलने के बचाया बच्चे को। वो अंदर भी बन गया, तो अंदर से डर लगने लगी। उसने पीछे से वार भी किया वाले के पीछे आपको मैंने बताया था, तो उस दूध वाले बच्चे ने बचाया था। बच्ची कितनी डरी हुई है, आप देखो कितनी भयंकर डरी हुई है। अभी हाँ, मेरा माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस एटमॉस्फेयर को जल्दी से जल्दी सही करें, क्योंकि जोधपुर के लिए ये बड़ा काला धब्बा। पुलिस उस वक्त नहीं थी, वो इमीडिएट वो फिर फोन किया गया उनको, फिर वो आए, 10 मिनट बाद आए। लेकिन वो जितने में उनकी जो ग्रुप बना हुआ था वो सब वहाँ से निकल गया, पूरा मोहल्ला से होके वो सब निकल गए वहाँ से। शायद कोई उनका हेड था, उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ से निकलो फटाफट, शायद पुलिस आ रही है, और जितने में वो सब भाग गए वहाँ से। अच्छा, कोई हेड था, उनको निर्देश कोई दे रहा था? कोई निर्देश दे रहा था, आगे से किसी ने कहा चलो 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 फटाफट निकलो यहाँ से, अब सही नहीं है। Viewers, these people were speaking to Anuj Mishra, your channel's reporter on the ground, who is also there, and he was there precisely in that same lane where these visuals are from, where these people are doing what the locals are describing to you, viewers. And I want to go across to Anuj Mishra. Anuj ji, thank you. आप ने ये लोगों से बात की, उन्होंने काफ़ी डिटेल में हम लोगों को बताया है कि वहाँ पर कितना खौफ का एक माहौल, that there is so much fear in this locality. अब मुझे एक चीज आपसे पूछनी है, जोधपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमने तो कर्फ्यू इंपोज कर रखा है,
तो ये कर्फ्यू में जहां पर आप लोगों को मुश्किल हो रही है इधर उधर जाने के लिए, ये मॉब राइटरों का ऊपर नीचे कैसे निकल रहा है? जी बिल्कुल राहुल, और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से इलाके के लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि पुलिस की मौजूदगी उस हिसाब से नहीं थी, क्योंकि रात में हिंसा हो चुकी थी। बावजूद ठीक जिस जगह पे हिंसा हुई वहां से चंद कदमों की दूरी पे दूसरा इलाका है कबूतर चौक, जहां पे सुबह के वक्त हिंसा हुई, लेकिन वहां पुलिस की मौजूदगी न के बराबर थी, ऐसा चश्मदीद कह रहे हैं। साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हमने दिखाया कि किस तरीके से मॉब जो है वो आती है, और मॉब में एक शख्स नकाब पहने हुए एक शख्स जो है वो लगातार मॉब को बुला रहा है, भीड़ को बुला रहा है, इशारे दे रहा है, निर्देश दे रहा है। और इलाके के लोग भी यही बात कह रहे हैं कि एक ऐसा शख्स था जो कि लगातार लोगों को इशारे देकर बुला रहा है। आखिरकार वो शख्स कौन है? क्या वाकई में ये पूरी हिंसा जो थी वो एक साजिश का हिस्सा थी? फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है। डेलीगेशन जो है वो पहुंचा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले ही इस हॉस्पिटल में डेलीगेशन पहुंचा हुआ था, जहां पर गृह राज्य मंत्री खुद मौजूद थे। उनका यह कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, जो घायल है उनसे मिला गया है, उनसे सीक्वेंस समझा गया है। लेकिन जब हमने ये सवाल पूछा कि क्या करौली हिंसा से सबक नहीं लिया गया, क्या जब रात में हिंसा हो चुकी थी उसके बावजूद जो सेंसिटिव इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पे पुलिस की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, वहां चौकसी नहीं होनी चाहिए, और लोकल इंटेलिजेंट कहां था? क्योंकि निश्चित तौर पर जब भी इस तरीके के त्योहार आते हैं उस वक्त लोकल इंटेलिजेंट को एक्टिव किया जाता है, लेकिन कहां था लोकल इंटेलिजेंट? ये तमाम सवालों पे उन्होंने चुप्पी साधी। उनका यह कहना था कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जो आई विटनेसेस थे वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से यह हिंसा भी एक साजिश का हिस्सा हो सकती है। फिलहाल हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है राहुल कि आखिरकार हिंसा होने के बाद क्यों चौकसी नहीं बरती गई? ये अपने आप में सवाल है। अब जांच की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जो वीडियोस मिले हैं, जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उनसे उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। लेकिन आखिरकार ये ऐसा क्यों करौली हिंसा से सबक नहीं लिया गया? ये अपने आप में बड़ी बात है। जी राहुल, This is a very, 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 very big question that is being posed. Why is it that another Karauli-like situation has been allowed to develop barely viewers, barely 20 odd days later? How is it that you have a situation today where 12 hours after curfew was clamped, people are running through the streets? What explains this? Now viewers, I will go across to Bhavar in just a few moments, but these are some of the questions that Anuj has been posing. But let me tell you, trouble started on the intervening night of May 3 and 4th with Parshuram Jayanti, Akshaya Tritiya and Eid being celebrated the next day. Tension started, and these are the pictures, the Jalore gate in the city. Late night, viewers, late night, mobs of different communities gathered and pelted stones at each other. Now the question is, what started it? There is a battle of versions underway right now. On the one hand, it's being alleged that Islamic flag was installed at the statue of a freedom fighter, to which the other community objected, and when an effort was made to remove the flag, clashes broke out. The other version is that an Islamic flag was replaced by a saffron one. Objecting to that, the Muslim community clashed with the other side. At least 5 policemen, 12 civilians have sustained injuries in the clashes. One is battling for his life. One civilian is battling for his life, stabbed in the back in hospital. Viewers, let me take you through the events. वही चौराहा है जहां से इस हिंसा की शुरुआत हुई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर फिलहाल जो है पुलिस बल जो है वो पूरी तरीके से मौजूद है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, और तमाम यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है वो मुस्तैद हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये हिंसा हुई उसके बाद से ही हालात
पूर्ण तरीके से बनाने के लिए ही यहाँ पे धारा 144 यानी जो करीब 10 थाने ऐसे हैं जहां पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि लोग अपने घरों से न निकले और शांति व्यवस्था कायम रहे। लगातार जिला प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील किया जा रहा है। इंटरनेट सेवा जो है वो फिलहाल बंद है और इसी वजह से इस चौराहे की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको पुलिसकर्मी दिखेंगे। दरअसल ये वही चौराहा है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। कल रात सबसे पहले करीब 11:30 बजे के आसपास झंडे को लेकर विवाद शुरू हुआ, उसके बाद हिंसा हुई, लेकिन उसके बाद तुरंत यहां पे पुलिस बल तैनात किया गया। काफी संख्या में यहां से फोर्स यहां पर बुलाया गया और लोगों को समझाया गया, दोनों समुदायों को समझाया गया। लेकिन जिस तरीके से सुबह एक बार फिर से हिंसा भड़की उसके बाद से ही यहां पर फिलहाल जो है शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। Okay, let me bring in Bhavan, you're in Rajasthan, of course, monitoring all these ground disturbances, and we are being told that even in Nagaur, there have been some clashes. What has happened in Nagaur? Nagaur में क्या हुआ है? देखिए, नागौर की अगर बात करें तो नागौर में एक समुदाय विशेष के लोग, एक ही समुदाय के लोग सिर्फ इस बात पर लड़ मरे कि नमाज पढ़ने की जगह को लेकर उनके आपस में लड़ाई हुई और लड़ाई पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पत्थरबाजी करते हुए लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। तो आप कह रहे हैं, एक मिनट भवन, आप कह रहे हैं कि ये सब जो लोग हैं, दोनों पक्ष के जो लोग हैं, वो एक ही समुदाय के हैं, दे आर फ्रॉम वन रिलीजन। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, देयर इज अ फाइट बिटवीन the members of just one religion. Let's be clear. जी बिल्कुल, नागौर की जो घटना है वहां पर एक ही समुदाय के दो लोगों के बीच में घटना हुई है, जबकि जोधपुर में दो समुदायों के बीच में घटना है। नागौर में जो घटना हुई है आपसी विवाद को लेकर एक ही समुदाय के दो गुट जो हैं वो आमने सामने हो गए, पत्थरबाजी हुई। तस्वीरों में जिस तरह आप देख सकते हैं कि पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस को वहां पर अपना दखल करना पड़ा और उनको रोक करके समझाइश अभी तक की जा रही है। हालांकि दोनों गुट अभी भी एक दूसरे से टसल पाले बैठे हैं, लेकिन एक ही समुदाय विशेष के गुट हैं जो कि नागौर के रहने वाले हैं और नमाज पढ़ने के दौरान इनमें आपसी तकरार हुई थी। Well, viewers, clearly a lot going wrong on the law and order front in Rajasthan. Thank you very much, Anuj. Thank you very much, Bhavan. I'll come back to you in a short while. Let's go straight across to some of our guests. Viewers, there are a large number of other reactions that are coming in, which I will bring you up to speed with. But first, Aljo Joseph, advocate, sympathizer of the Congress, let me ask you, has the Rajasthan Congress government lost total control, or is it standing down because the BJP says it wants to appease one community over the other and therefore has not been able to restrain them because it doesn't have the will to do so? Aljo Joseph. Yeah, Rahul, let me first condemn this entire episode which has happened in Jodhpur. I strongly feel that such kind of an incident should not have happened there. Coming back to your question, I don't think last 3 years there was any problem with regard to the administration and law and order situation in Rajasthan. And this is also not a problem with regard to the entire state of Rajasthan. This is an incident which has happened in Jodhpur. Fair enough, such an incident has happened. But let me just tell you, one thing. I have seen, and you have seen a couple of weeks back, there was an incident which has happened. A flag has been hoisted before a Musafirpur mosque on the Ram Navami day. So these things are now instigated at the BJP level, and this has been happening because of the divisive politics which has been planted by BJP. I'm using this word very carefully, by BJP over many decades. The intolerance has been aggregated many times, and these things happen when there is a small, any kind of a small incident happen. In this particular case, are you suggesting that leads to violation? Are you suggesting that in Jodhpur too there has been a conspiracy by saffron groups to upset the peace? Is that what you're saying?
I am not saying there is a conspiracy. I am saying the intolerance which has been cultivated in this country, the divisive politics which has been played by BJP for over many decades, these things are creating a distrust in every state. If you take the example of Delhi, just a tweet from a quick response. member of parliament lead to a problem. If you take the examples in if you take the examples of Karnataka, what you call intolerance is basically you want a green flag to carry on with the kind of underhanded activities that you've been promoting all along. Rahulji, just let me put this out in points for everybody, the panelists and the viewers. First of all, you are shielding the rioters, which is exactly why they have so much of a morale boost that they continue to have these sort of rioting activities all over Rajasthan repeatedly. And there is no gap between these activities. Jodhpur is not the first. Unfortunately, sadly, Jodhpur will also not be the last. Secondly, the police acts according to the political will. The political will in Rajasthan is clearly showing that they're not interested in police bringing down the rioters at all. In any other state, have you seen the rioters going scot-free like this without any sense of responsibility, without anybody pinning the blame on the right person, making an efforts to arrest them? Not at all. And this is an outcome of appeasement politics today, that these rioters go around city to city, they look at each other and they get inspired, and CM Gehlot is happy to sit on his chair, a failed CM, because he thinks this kind of appeasement politics is going to get him a few more votes, which is a big fat lie. I don't think that's going to happen. Elections around the corner. No, but Charu Pragya, the Congress will say, that in Karauli, for example, they booked Matloob Ahmed, they booked others from the minority community. If they were appeasing them, why would they want to book them? That's what they would say. Rahulji, you are... Exactly, and he has been booked, but where is he? Where is he? So this kind of booking is only on paper. It is for show. It is superficial. Okay. There is no booking. There is no arrest. It is superficial. It is superficial. Therefore, there is no deterrence, and therefore, one particular community thinks it can behave with impunity. That's the BJP's counter. Now, let me bring in Rishi Bagri. Rishi Bagri, you're a political analyst. Where do you come in on this? You've heard both sides. No, you need to understand. I mean, after Karauli and Chhapra, I mean, Jodhpur, which is supposed to be the home district of our Chief Minister Ashok Gehlot, saw violent clashes after radicals put Islamic flag in the Bal Mukund Bistas circle, and they removed some certain flags. I mean, furious stone pelting and vandalism at the Jalori gate was seen by after local people resisted them. Now, stones were pelted in the parked car, shops were damaged, while police remained a mute spectator. Even ladies and children were not spared. And this is not Sanyog, this is a prayog of protecting these rioters from Karauli to Chhapra to Jodhpur. I mean, this is not just an intelligence failure, but complete failures of the Gehlot government due to the vote bank politics. I mean, after 25 days, the Karauli riots mean accused Matloob Alam is still not arrested. Chhapra riot accused was seen at the iftar party hosted by Gehlot ji. I mean, they are giving a free run to the PFI. The PFI is allowed. Now, hang on. Yeah. The PFI, Aljo Joseph, is allowed to hold demonstrations. The BJP youth wing is not. You invite rioters or those booked for rioting to your iftar parties. You don't arrest, despite naming the principal accused in the Karauli clash. You don't arrest him. In fact, there are people claiming that you gave them an exit option. You assisted in their escape. How is that not appeasement? And how is that not giving a free run to one particular community to do this? Simple question, sir. Rahul, this is not appeasement of any community. First of all, the radical elements, you know it one very second. well. Aljo Joseph, you didn't get me. This is there everywhere. How is it not appeasement? Now I'm asking you, if you're going to call a certain number of rioters under trials, accused, to your iftar party, what does that tell you? Why are you doing it? See, it is a personal business. I cannot offer any comment with regard to that. What do you mean it's a personal business? Calling someone for this is a chief minister was
I state. cannot comment on it. But on the No, riot, you have. In the past, the Congress party has taken great umbrage. In the past, the Congress party has taken great umbrage when a union minister in the past felicitated, felicitated, sir, people who were accused of mob lynching. At that time, it became a huge issue. People wrote letters to the Prime Minister and the President. So I'm asking you, why one set of rules for BJP government states or BJP leaders and a completely other set of rules for Congress ruled states or Congress leaders? Simple question, Mr. Joseph. Rahul, if we go back in history, that's what I tried to tell you, some history, because history always, tried to remind us something. If you go back in history, whenever these kinds of incidents are there, Congress always stood with the public. Congress always stood with the nation. So how far do you want to go back in history? 84 riots? The country. Do you want to go to Bhagalpur? Do you want to go to 84? Do you want to go to the pogrom in Kashmir? How far? Which riot? 1 minute. Viewers, I'm going to draw this. No, 1 second. I need to take a short break. When we return, viewers, we return with another big story. Don't go away. More exclusives following on the explosive exclusive. Stay with us.